Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope so you guys are fine. So आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 पे बात करेंगे जिसका नेम है क्वालिटी एजुकेशन, अ की टू सक्सेस। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है मयारी तलीम। अ की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी। मयारी तलीम हमारी कामयाबी की कुंजी कैसे होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब हमारा जो होगा ये मेरी इस चैनल पे फर्स्ट लेक्चर होगा, इस पे हम पहले ट्रांसलेशन किया करेंगे। आफ्टर दैट आई विल सेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट पैरा पे आ लेते हैं। क्वालिटी एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर वर्ल्ड। क्वालिटी एजुकेशन हमने पहले पढ़ा, मयारी तलीम। इसेंशियल ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पायदार तरक्की या देर पा तरक्की ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया। क्वालिटी एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर वर्ल्ड। मयारी तालीम हमारी दुनिया की पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। It helps individuals gain knowledge, skills and values necessary for their productive and fulfilling lives. इसमें अब हमने जो मीनिंग सीखने हैं, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अफराद, गेन हासिल करना, नॉलेज इल्म, स्किल्स महारतें, वैल्यूज़ इकदार, नेसेसरी ज़रूरी, फॉर देयर प्रोडक्टिव पायदार एंड फुलफिलिंग कारआमद लाइफ ज़िंदगियाँ। ये अफराद को इल्म, महारतें और इकदार से लैस करती है जो उनकी कारआमद और पैदावार देने वाली ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी है। ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इंडिविजुअल्स को ऐसी स्किल्स देती हैं, ऐसा नॉलेज देती हैं कि जो उनकी लाइफ्स को प्रोडक्टिव बनाते हैं। देयर लाइव्स हैव सम मोटिव, दे हैव टू एम समथिंग, दे हैव टू अचीव देयर एम्स, understand what I'm saying? So quality education provides these abilities. It encompasses a holistic approach. होलिस्टिक अप्रोच का हमारे पास मीनिंग होता है जी हम्मा जहद नुक्ता नज़र, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हम्मा गीर नुक्ता नज़र। आप इनमें से कोई सा मीनिंग कर सकते हो जो सबको ईजी लगे। इक्विप्स का मतलब होता है लेस करना यानी भर देना। लर्नर्स कहते हैं सीखने वालों को यानी तुलबा को, बिकॉज स्टूडेंट्स आर लर्निंग एवरीथिंग एवरी सेकंड एवरी मोमेंट विद द नॉलेज इल्म, स्किल्स, महारतें, वैल्यूज़, इक़दार एंड एटीट्यूड्स का मतलब होता है रवैये, नेसेसरी ज़रूरी, टू थ्राइव तरक्की करना इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में। अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा कर लेंगे। इट encompasses a holistic approach to education that equips learners with the knowledge, skills, values and attitudes necessary to thrive in a rapidly changing world. इसका क्या हमारे पास बामुहावरा तर्जमा होगा, ये तुलबा ये तालीम के उस हम्मा गिर नुक्ता नज़र पर मुहित है, उस पर वो ऐसी चीज़ है जो तुलबा को तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में फलने फूलने या तरक्की करने के लिए ज़रूरी इल्म, महारतें, इक़दार और रवैयों से लेस करती है। ठीक है, इन सब से वो स्टूडेंट्स को वो सब कुछ देती है ताकि वो इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, जहाँ पे आप आजकल देख रहे हैं कि वर्ल्ड में कैसे चेंजिंग आ रही है, कैसे हम लोग डेवलपमेंट आ रही है, कैसे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ये सब कुछ वो कहते हैं। जब हम क्वालिटी एजुकेशन मयारी तालीम हासिल करते हैं तो फिर हमें ये सब कुछ हम दुनिया के साथ चल सकते हैं। वो होता है ना कि कुछ बिल्कुल साइड पे होते हैं, पूरी दुनिया से उनको कोई नहीं होता और हम उनको कहते हैं कि तुम लोग तो दुनिया के साथ चल ही नहीं सकते। सो ये इस लाइन में वो बता रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पायदार तरक्की, एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस मेंट बाय अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा की बयान करदा तारीफ़ के मुताबिक मयारी तरक्की एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। मयारी तरक्की का क्या मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। किस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी एबिलिटी पे भी हमने कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वी हैव टू मीट आवर बोथ नीड्स एट सिमल्टेनियसली
as well as in present and as well as in future. We have to do something. Education fosters, तालीम बढ़ावा देती है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मुआशी नशोनुमा. रिड्यूस पॉवर्टी का मीनिंग होता है गुर्बत को कम करती है. प्रमोट जेंडर इक्वालिटी सिनफी मसावत को फ़रोग़ देती है. लाइक वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, वी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. और माहौल को महफूज करने में और माहौल की हिफाजत करने में हमारी मदद करती है. अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा कर लेते हैं. मैं यहाँ से कर दूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. इसका बामुहावरा तर्जमा क्या होगा? अक़वाम मुत्तहिदा की बयान करदा तारीफ़ के मुताबिक पायदार तरक्की का मकसद मुस्तक़बिल की नस्लों को उनकी अपनी सलाहियतों को पूरा करने की अहलियत पर समझौता किए बगैर मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा करना है. ठीक है, लाइक वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आर present for worrying about future. We have to aim both needs simultaneously. Education fosters economic growth, reduce poverty, promotes gender equality and helps protect the environment. इसका अब हमारे पास बामुहावरा आ जाता है. तालीम मुआशी तरक्की को बढ़ावा देने, गुर्बत को कम करने और सिनफी मसावत को फ़रोग़ देने और माहौल की हिफाजत करने में हमारी माहौल की हिफाजत करने में हमारी मदद करती है. नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान में वेयर आ सिग्निफिकेंट पोर्शन का मतलब होता है अहम हिस्सा, बड़ा हिस्सा ऑफ द पॉपुलेशन आबादी का इज़ यंग, नौजवान है. पाकिस्तान में जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है. इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, इन्वेस्टिंग मीन्ड बाय सरमायाकारी, लाइक वी इन्वेस्ट आवर मनी इन एजुकेशन. जब हम ये जानते हैं, जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमें जिसका सबको पता है बिज़नेस, वी इन्वेस्ट इन बिज़नेस, वी डू समथिंग. जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो हमें उसका बेनिफिट होता है ना, वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है और इसको सरमायाकारी कहते हैं. और ऐसे जब हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक हम इसको टाइम देते हैं, अपना फोकस देते हैं, अपना पैसा देते हैं, तो तब हमें जो मिलता है ना, क्वालिटी एजुकेशन जो हमें मिलती है वो हमें एम्पावर्स करती है. ठीक है, कहते हैं जब हम एजुकेशन करते हैं तो ये पोटेंशियल ऑफ मिलियंस, लाखों की सलाहियतों को अनलॉक करता है. ड्राइविंग द कंट्री टूवर्ड्स प्रॉस्पर्स एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. और ये जो हमारी मुल्क है उसको प्रॉस्पर्स, खुशहाल और पायदार मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है. अब हम इसका बामुहावरा कर लेते हैं. इन पाकिस्तान वेयर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज यंग, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन can unlock the potential of millions, driving the country towards a prosperous and sustainable future. अब इसका मीनिंग कर लेते हैं बामुहावरा तर्जुमा. वो हमारे पास आ जाता है जी. पाकिस्तान में जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तालीम में सरमायाकारी लाखों लोगों की सलाहियतों को सामने लाकर मुल्क को खुशहाल और पायदार मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकती है. और इसी के साथ हमारा पहला पैराग्राफ ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ दिस दैट इन पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है मुआशी तरक्की. पाकिस्तान में मेयारी तालीम मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है. इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर द वर्क फोर्स. ये अफराद को इल्म और महारतों से इट इक्विप्स का मतलब होता है लेस करना. इंडिविजुअल्स अफराद को विद स्किल्स, महारतों के साथ, एंड नॉलेज और इनके साथ नेसेसरी ज़रूरी है फॉर द वर्क फोर्स का मतलब होता है अफरादी क़ुव्वत. अब हम इसका बामुहावरा एक दफ़ा कर लेते हैं. ये अफराद को अफरादी क़ुव्वत के लिए ज़रूरी महारतों और इल्म से लेस करती है, लाइक उनको भर देती है अफराद को. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब हमने ना यहाँ पे इसका जो मुश्किल वर्ड्स है इस लाइन में, वो तो डेवलप का मतलब होता है इनमें डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है.
ڈیولپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی میں ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو بیدار کر رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ. پرابلم سالونگ ایبلٹیز مسائل کو حل کرنے کی اہلیتیں. ایبلٹی کا اہلیت ہوتا ہے, اس کا پلورل اہلیتیں. اب ہم ایک دفعہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر میتھمیٹکس ریاضی, سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے مضامین طلباء میں تنقیدی سوچ بیدار کرنے اور مسائل حل کرنے جیسی اہلیتیں پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ تنقیدی سوچ, اور ان مضامین میں ہم تنقیدی سوچ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. لائک سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے میتھمیٹکس. Mathematics is a subject in which we solve problems. We have given a problem and we have to solve that. We don't have to create problems. We have to solve problems. We have by the word critical thinking. It is meant by critical thinking. When we see something, we observe it. ٹھیک ہے, ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں کیسے ہوئی, پھر ہم اس میں جو ہمارے کوشچنس کچھ ہوتے ہیں, ہم کسی چیز کو دیکھیں, کوئی پروسیس ہو رہا ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کو نوٹ کرتے ہیں. اچھا اگر یہاں پہ لائک گرائنڈر ہے, یہاں پہ اچھا وہ اگر ہم نے اس کو آن کیا ہے تو اس نے کیسے چیزوں کو سارا مکسچر بنا دیا ہے. یہ ہماری ایک نوٹ ہوتی ہے, ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. سائنس جو میں آبزرو کہہ رہی ہوں, سائنس کی ڈیفینیشن ہی وہی ہے. سائنس از دا اسٹڈی آف آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن اراؤنڈ اس. کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہم اس کو آبزرو کریں, اس کو ہم نوٹ کریں اور آبزرو کرتے ہیں, پھر بعد میں اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کوئی پروسیس ہو رہا ہے, ایک ایزی سی مثال لے لیں, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہے, وہ ہمیں پڑھا رہا ہے, ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں وہ کیسے پڑھا رہے ہیں. اچھا انہوں نے سب سے پہلے یہ پڑھایا, پھر اس طرح بتایا, پھر اس طرح بتایا. جب ہم نے اس کو آبزرو کر لیا, اپنے دماغ میں بٹھا لیا, پھر ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے, پھر ہم خود پڑھائیں گے. اور اسی طرح اس کو لائک یہ ایگزامپل دی ہے اس کو ایزیلی, یہ سائنس ہوتی ہے. ٹیکنالوجی, جیسے آج کل بہت سی ٹیکنالوجیز آئی ہوئی ہیں, ہم ان ٹیکنالوجیز پہ غور و فکر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے گی. اگر کسی نے لائک کوئی ہیومن ہی ہے نا جس نے بنائی ہے, اور جیسے کہ موبائل ہے, موبائل کسی انسان نے بنایا ہے. اب ہم یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس جو آج کل ہماری بنیادی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ریفرز ٹو دا لائک all the development that we are having nowadays, mobile phones and what like there are glasses, there is a type of glasses nowadays that is going in trending that has a camera installed. Okay, so اب ہم دیکھتے ہیں, یہ تو کتنی حیرت کی بات ہے, لائک گلاسز میں بھی کیمرہ آئے گا. سو یہ ٹیکنالوجی ہے, ہم ٹیکنالوجی پہ بھی غور و فکر کریں, تنقیدی سوچ پیدا کریں. اچھا اگر موبائل بنا ہے, اس میں یہ اپلیکیشن چل رہی ہے, یہ کیسے چل رہی ہے, اس کے پیچھے کا پروسیس کیا ہے, یہ سارا کچھ ہے. These skills are in high demand in various industries including technology, health care and engineering. ٹیکنالوجی کا مطلب ٹیکنالوجی ہوگا, ہیلتھ کیئر حفظان صحت, اینڈ انجینئرنگ کا انجینئرنگ. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں اس لائن کا. ان مہارتوں کی مختلف صنعتوں بشمول ٹیکنالوجی, حفظان صحت اور انجینئرنگ کو شامل کرتے ہوئے بہت زیادہ مانگ ہے. Next is this that by preparing students for these fields, طلباء کو ان شعبات کے لیے تیار کرنے سے quality education can reduce unemployment and underemployment. quality education معیاری تعلیم, unemployment بے روزگاری, like you don't have a job, it is meant by this. And underemployment just be بے روزگاری, like you don't know whenever you will be fired from your job you are an employee in a company or in any institution, you are not a boss, you are not a like master, you understand what I'm saying. Next is leading to increased economic prosperity, کہ جو بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کی صورت میں نکلتا ہے. By preparing students for these fields, quality education can reduce unemployment and underemployment, leading to increased economic prosperity. اس کا ہم اب کر لیتے ہیں بامحاورہ. طلباء کو ان شعبات کے لیے تیار کرنے سے معیاری تعلیم بے روزگاری اور جزوی بے روزگاری کو کم کر سکتی ہے, جس کا نتیجہ بڑھتی ہوئی معاشی خوشحالی کی صورت میں نکلتا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا, لائک کہاں تک, پراسپیرٹی تک. A well educated population can drive innovation and productivity, contributing to the economic development. اب اس کا ہم بامحاورہ کر لیتے. پہلے ورڈس کے میننگ. انوویشن, یہاں پہ انوویشن لکھا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جدت پیدا کرنا, پروڈکٹیوٹی پیداوار, کنٹریبیوٹنگ حصہ ڈالنا, اوور آل داڑھی, اکنامک ڈیولپمنٹ معاشی ترقی. I'm tired.
A well-educated population can drive innovation and productivity, contributing to the overall economic development. इसका मीनिंग क्या होगा? आला तालीम याफ्ता आबादी मजमूई मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए जिद्दत और पैदावार की तरफ ले जा सकती है. अब ये पैराग्राफ जो था ना, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? You have to write your answers in comments before before hearing mine. Okay, so let me explain what is meant by economic development. It is referred to as muashi taraqi in Urdu, but it's mean by अच्छा, अब मुआशरा तरक्की कैसे करेगा? सब एक साथ नहीं ना तरक्की कर जाते, वन बाय वन हर कोई एक लाइक. अब हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. थिंक ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, अब आपने खुद से शुरू करना, तरक्की करना. आप अपने तालीम को फोकस पे करके पढ़ते हैं, आप उस पर गौर व फिक्र करते हैं, आप इल्म हासिल करते हैं. ठीक है, जब आप जो सब कुछ सीखेंगे आप उसको अपनी रियल लाइफ में भी अपना करेंगे, इंक्लूड करेंगे. ठीक है, और आप अगर तरक्की करते हैं, ठीक है, आप करेंगे इंशाल्लाह, तो आपने अपने हिस्सा डाल दिया. फिर आपकी तरफ देख के आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, वो भी चाहेंगे कि हम भी माशी तरक्की में अपना हिस्सा डालें. लाइक मैनर्स, दैट इज़ अपनी वैल्यूज़ करें, स्किल्स वी हैव, हमें नॉलेज हो. तो ये सब कुछ ना, फिर देखें, पहले आपके पास था इन लाइक आप माशी तरक्की में हिस्सा डाल रहे थे, फिर आपकी तरफ देखिए आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी किया, और ये फैमिली मेम्बर्स क्लोज रिलेटिव्स लाइक योर सिबलिंग्स एंड योर पेरेंट्स. आफ्टर दैट आप सबकी तरफ देख के आपके maternal grandparents, paternal grandparents, maternal uncle aunt, paternal uncle aunt, all these relatives which are our close relatives as well. So ये सभी आपको देख के लाइक आपसे इंस्पायर हो के, जिसको इंस्पायर करना कहते हैं ना, वो भी कोशिश करेंगे हम भी डालें. ठीक है, सो फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल, यू आर इंडिविजुअल, एंड व्हेन यू डू समथिंग other people get inspired from you. So okay, so think of it is as about 30 to 35 people are contributing to economic development, but they are still not too much. Then their friend gets inspired from them, and after that the friends of their friends and the family members, like we have economic development. सो इसका अब जो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो क्या निकलता है? मुआशी तरक्की, कोई मुआशरा खुद ही तरक्की नहीं कर जाता, हर किसी को अपना अपना कंट्रीब्यूटिंग करने पड़ते हैं, अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है. फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं लाइक चाइना एंड अमेरिका, यहाँ पे लाइक हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं उन कंट्रीज़ में. यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे. वहाँ पे हर सब कुछ अपना खुद ही करते हैं. यू हैव द एबिलिटी टू डू इट, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी, बस इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई मुआशरा लाइक वो सो के उठते तो तरक्की नहीं कर लेते. आप एक इंडिविजुअल से हमारी तरक्की शुरू होती है और फिर वो मुआशरी तरक्की की शुरुआत में निकलती है. एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल फॉर empowerment, enabling individuals to realize their full potential and participate actively in social, economical and political spheres. अब इसके जो मीनिंग मुश्किल है उनका पढ़ लेते हैं. इनेबलिंग, ये क्या हमारा इनेबलिंग, ये रहा इनेबलिंग का मतलब है काबिल बनाना. एंड और क्या है यहाँ पे मुश्किल वर्ड्स? इकोनॉमिक मुआशरी, सोशल मुआशरी, इकोनॉमिक मुआशरी, मैशी एंड पॉलिटिकल, सियासी स्फीयर्स का मतलब सर्कल्स. अफराद को उनकी मुकम्मल, अब इसका बाद मुहावरा कर लेते हैं. अफराद को उनकी मुकम्मल सलाहियतों का शऊर हासिल करने और मुआशरती, इक़्तिसादी और सियासी मैदानों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने के काबिल बनाते हुए तालीम खुद मुख्तारी देने के लिए एक ताकतवर हथियार है. ठीक है, अब इसको हम इस लाइन को समझ लेते हैं. ये ना सही बड़ी लाइन है. इसका मतलब है कि जब हमें अपनी तरक्की का शऊर होगा, हमें पता होगा कि हमारे अंदर है इतनी पोटेंशियल कि हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम अपनी जब जान लेंगे अपने अंदर पैदा हुई स्किल्स को, तो हम एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. नेक्स्ट इज इट इक्विप्स them with essential skills. ये उन्हें
ضروری مہارتوں سے لیس کرتی ہے، سچ ایز جیسا کہ لٹریسی، خواندگی، نیومریسی، حساب دانی اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی، اور جیسے ہندسیاتی خواندگی، لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار لائف لانگ لرننگ اینڈ سوشو اکنامک ایڈوانسمنٹ. اس کا اب ہم محاورہ کر لیتے ہیں. تاحیات سیکھنے کے عمل میں، تاحیات لائف لانگ سیکھنے کے عمل میں عمل کی بنیاد ڈالتے ہوئے، تاحیات سیکھنے کے عمل کی بنیاد ڈالتے ہوئے اور معاشی و سماجی ترقی دیتے ہوئے. ٹھیک ہے. اینڈ یہاں سے یہ معیاری، یہ کا مطلب ہے یہاں پہ ہم یہ یوز کریں گے ٹرانسلیشن میں، بٹ یہ ریفرز ٹو معیاری ترقی ضروری مہارتوں جیسے خواندگی، حساب دانی اور ہندسیاتی خواندگی سے لیس کرتی ہے. ٹھیک ہے. ویل ایجوکیٹڈ کدھر گیا، سوری educated individuals are more likely to engage actively in sustainable in community development initiatives, advocate for social justice and contribute to sustainable development practices. اب یہاں پہ ہمارے انیشیٹو کا مطلب ہوتا ہے اقدامات. کمیونٹی ڈیولپمنٹ، لائک کمیونٹی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا معاشرتی، اب ہم نے پڑھا ہے کمیونٹی، یہ سماجی ترقی ہو جائے گی. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از دس دیٹ سوشل جسٹس، معاشی انصاف، اینڈ کنٹریبیوٹ حصہ ڈالتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی پریکٹسز کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس منصوبوں وغیرہ میں. اب ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں بامحاورہ. پڑھے لکھے افراد کا سماجی ترقی کے منصوبوں میں حصہ لینے، معاشرتی انصاف کے لیے آواز اٹھانے اور پائیدار ترقی کے منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرنے میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائے گا ایجوکیشن از کروشیل فار ایڈوانسنگ جینڈر ایکویلٹی بائی امپاورنگ وومین ود نالج، کانفیڈینس اینڈ اپرچونیٹیز فار لیڈرشپ اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس. اب پہلے ہم اس کا باب محاورہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اس کو سمجھیں گے. عورتوں کو علم، خود اعتمادی، کانفیڈنس کا مطلب ہے خود اعتمادی، اور قیادت کا لیڈرشپ کے مواقع اور معاشی زندگی دے کر خود مختار بناتے ہوئے ہم تعلیم صنفی مساوات کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے. صنفی مساوات کا میں نے پہلے بتایا تھا، لائک we should know that and we should treat that like that women and men have the same rights. The men are not more than women. Women are highly respectable and they should have confidence and to act as a leader. Like nowadays it is happening, it is right. We have teachers, we have female teachers, we have female software engineers, we have female army, and we have female CM as well. CM means she is a leader of us and she is a female. We give her confidence to do this, we gave her, but it is not too much like in our society. We still read a lot of and we know a lot of news in which like women are mistreated, which should not have, but it is happening. So it's a bad luck. Even though we know that women have equal rights, but I don't know why our country is not doing that. So just let that be at a side. We will talk about it some other time. So with this last sentence, our third para is also finished. We will learn about next three paras in the next lecture. So goodbye, Allah Hafiz, take care.